सो तो आज हम लोग कोडिंग सीखेंगे। कोडिंग, सो कोडिंग इज़ द आर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो हम लोगों को कोडिंग से सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। तो सॉफ्टवेयर डेवलप कैसे सॉफ्टवेयर डेवलप हो सकते हैं कोडिंग से? हर टाइप के सॉफ्टवेयर हम लोग कोडिंग से डेवलप कर सकते हैं। एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए हम लोगों को कुछ कोडिंग प्रिंसिपल्स और पैराडाइम्स का यूज़ करना पड़ता है, जिससे हम लोग एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकें। सो कोडिंग इज़ नॉट अबाउट कि सॉफ्टवेयर एक चालू चलता हुआ सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। कोडिंग की प्रैक्टिसेस होती हैं जिससे हम लोग एक अच्छा स्केलेबल, मेंटेनेबल, डिप्लॉयबल, डिलीवरेबल सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। सो इन दिस सीरीज वील ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कोडिंग एंड हाउ वी कैन मेक ऑसम सॉफ्टवेयर्स यूजिंग द टूल्स that are provided by the coding. So what is a software? So a software is a piece of code that is running on a computer. तो कोडिंग से ही हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो सॉफ्टवेयर है क्या? सॉफ्टवेयर एक पीस ऑफ कोड है, एक कोड ही है जो कि आप लोगों का कंप्यूटर में रन कर रहा है। एक कोड ही है जो की वजह से मैं अभी अपने मॉनिटर में डिस्प्ले देख पा रहा हूँ। एक कोड ही है यूट्यूब का जिससे आप इस वीडियो को अभी एक्सेस कर पा रहे हो। तो कोडिंग की वजह से ही हम लोग एक सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं। तो इन दिस वीडियो सीरीज़ में हम लोग अपनी कोडिंग को जानेंगे और देखेंगे कि कैसे कोडिंग ने हमारे सॉफ्टवेयर्स को ऑसम बनाया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कोडिंग इज़। तो कोडिंग क्या है? कोडिंग एक तरीका है। कोडिंग इज़ अ तरीका, इट्स अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। इट्स अ वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द यूज़र और वी वुड से प्रोग्रामर। यूज़र यहाँ पे है ह्यूमन, बिटवीन अ ह्यूमन एंड अ कंप्यूटर। एंड ये कम्युनिकेशन कैसा होता है? ये होता है द कम्युनिकेशन बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर इज़ एक्चुअली वन वे। इसमें हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं कंप्यूटर से। तो कंप्यूटर लोगों से कम्युनिकेट नहीं करता। जी हाँ, कंप्यूटर इम्प्लिसिटली चाहे तो खुद से कोड से अपने आप से कंप्यूटर कम्युनिकेट नहीं कर सकता। वी एक्चुअली टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। सो बाय द मीन्स ऑफ कोडिंग वी टेल the computer what to do. So but unfortunately a computer does not understand the languages of English or Hindi or any other language that is well common and understood by the human race. So it becomes difficult to communicate directly with the computer. तो अब हम लोग कंप्यूटर से कम्युनिकेट कैसे करें? तो for that we need a kind of an middle ground कि थोड़ा सा कंप्यूटर है और यहाँ पे हम हैं। कंप्यूटर को इंग्लिश नहीं आती, हिंदी नहीं आती और कोई भाषा नहीं आती, और हमें कंप्यूटर की भाषा नहीं आती। कंप्यूटर की भाषा से मतलब है बाइनरी लैंग्वेज। वी डोंट नीड नो बाइनरी लैंग्वेज। सो दे वी नीड टू फाइंड आउट सम काइंड ऑफ मिडिल ग्राउंड जिससे हम लोग कंप्यूटर को अपनी चीज़ें समझा सकें, कंप्यूटर को से हम लोग बात कर सकें। तो हेयर इट इज़ आवर कंप्यूटर एंड हेयर इट इज़ यूज़र। तो ये मिडिल ग्राउंड ही जानते हो क्या है? यही है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जो कि एक ज़रिया देती हैं कि हम लोग प्रोग्राम भले ही इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में लिखें। इंग्लिश लाइक, क्योंकि इंग्लिश ज़्यादातर हम लोग जनरली यूनिवर्सल लैंग्वेज है, तो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में हम लोग अपना कोड लिखते हैं। सो सोर्स कोड इज़ इन अ सोर्स कोड जो कि हम लोग लिखते हैं। द कोड एक्चुअली यूज़र राइट्स, इट्स यूज़र और अ प्रोग्रामर राइट्स इज़ नोन एज द सोर्स कोड। तो जो सोर्स कोड हम लिखते हैं वी राइट इट इन एन इंग्लिश लाइक लैंग्वेज। इंग्लिश लाइक लैंग्वेज जैसे कि पाइथन हो गया या जावा स्क्रिप्ट हो गई, जावा हो गया, जैसे पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं। देयर आर एक्चुअली वेरी इंग्लिश लाइक लैंग्वेजेस। तो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज हम लोग अपने कोड को लिखते हैं एंड दैट इंग्लिश लाइक लैंग्वेज का कोड इज ट्रांसलेटेड इनटू बाइनरी लैंग्वेज दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड comprehend. So by the means of coding we are able to learn this middle ground wali language and this middle ground English like language and try to communicate our thought process, our ideas, our instructions to in a language that computer can understand. तो यही है कोडिंग। आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे। तो क्या कोडिंग से हम लोग सॉफ्टवेयर्स बना तो सकते हैं, मगर क्या सॉफ्टवेयर्स बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? तो जनरली सॉफ्टवेयर्स एक्चुअली होते क्या हैं? सॉफ्टवेयर्स आर बेसिक सॉल्यूशंस टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। एंड जी हाँ, आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करें आपसे कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व आपकी हो रही होगी, कोई ना कोई सर्विस को प्रोवाइड कर रहा होगा जिससे आपकी कोई ना कोई ज़रूरत हो, कोई ना कोई आपकी नीड को फुलफिल कर रहा होगा। सो अ सॉफ्टवेयर ऑलवेज प्रोवाइड्स अस
always provides us with a service. And there's a very famous quote कि real problems need real solutions. So when I say real problems need real solutions, I mean कि जब हम लोग एक सॉफ्टवेयर, क्योंकि सॉफ्टवेयर एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, तो सॉफ्टवेयर के अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, जो मिडिल ग्राउंड लैंग्वेजेस यूज़ हो रही होंगे, दे एक्चुअली विल बी very related or very relatable to real world entities. जी हाँ. तो जनरली जो हम लोग जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जो कि इंग्लिश लाइक मिडिल ग्राउंड वाली लैंग्वेजेस हैं, जो कि कन्वर्ट करती हैं अपने यूज़र की लैंग्वेज, अंडरस्टूड लैंग्वेज को एक मशीन के अंडरस्टूड लैंग्वेज यानी बाइनरी लैंग्वेज में, दे आर एक्चुअली very close to the real world entities, and they actually implement concepts so that which can actually be solved in a very real world scenario. तो चलिए देखते हैं कि कैसे सॉफ्टवेयर से हम लोग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. तो एक बहुत ही रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम का हम लोग एग्जांपल लेते हैं. सपोज़ कि आपको एक बटन दबाना है, एंड दिस इज़ अ बटन, और इस बटन से एक नंबर जनरेट हो रहा है. तो इट्स काइंड ऑफ अ डाइस. तो आपने जैसे कि इस बटन को दबाया, यू प्रेस अ बटन एंड अ रैंडम नंबर इज बीन जनरेटेड, अ रैंडम डाइस है. डाइस कहाँ से होता है? 1 से 6. सो रैंडम नंबर इज बीन जनरेटेड, एंड दैट रैंडम नंबर को जनरेट करके आपको आगे अपना जो गोटी है, या किसी कह सकते हैं जो टोकन है, इस गोटी को आगे बढ़ाना है. सो अगर एक ये 1 आया तो आप एक हाउस आगे बढ़ाओगे, 2 आएगा तो 2 हाउस आगे बढ़ाओगे, एंड 6. ऐसे आपको एक सर्विस बनानी है. तो आई नो काफ़ी बेसिक सी चीज़ मैंने ली है, एंड यू नो कि ये एक्चुअली एक कॉम्प्रिहेंसिव सॉफ्टवेयर नहीं है, बट एक बड़े से सॉफ्टवेयर की एक छोटी सी सर्विस है, बट स्टिल इट्स एक्चुअली वेरी इंफॉर्मेटिव, एंड you will be able to understand much of the concepts related to coding. So first of all, we have a user, or you could say someone who uses. What is a user? Which will use this service. So user जब आएगा, he'll just press a button, or software will actually throw him a number between 1 and 6, and when that number 1 and 6 is thrown back to the user, he'll be able to move his token accordingly according to the number that is been given out by the machine. Okay, now it's a very simple scenario. So let's break it down. And we are asked to develop it. So let's break it down. Okay, so first of all, we have a user. User is pressing a button. So what is pressing of a button is actually by the press of the button, user presses a button. So user presses a button. So what does the user do? User's action is, it is pressing of a button. So what happens when we press the button? We initiate a service. So by pressing a button, what is the intention behind the user to press a button? The intention is to ask the application. User says, the intention is to ask the application to get him a random number between 1 to 6. Okay, so this is the intention. So when we say the user wants something for a service, user needs to provide some action. It's acting upon a service. So that button has been pressed. Now this random number generator, that what it is using? It is using some computational logic. What is computational? Computation is calculation.
is using some calculative hidden logic. This hidden logic is not known by the user, is not revealed, or it is not known to the user unless he is a programmer. Unless he has himself or coded, or the code is revealed, और द कोड इज रिवील्ड, और ही इज अ प्रोग्रामर. अगर नॉर्मल यूज़र है जो उसे नहीं पता है कि ये जो अंदर रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है कैसे जनरेट हो रहा है, तो so just is user is very, you could say, simple banda. He just presses the button, tries to initiate a service, gets a number between 1 and 6, and when he gets the number between 1 and 6, so how will he get a number? The machine will throw the result back to the user. So it will throw the result back to the user, or it will give the requested or the desired output to the user. So that is what forms the basis of software. So first of all, the user who actually needs to solve some problem. So the problem that this machine is solving is that the user is giving him a random number between 1 and 6. So user first try to press the button, initiate some process, and initiate some computational process, which actually gives him the result. The user isn't aware about the computational process inside, and he is just happy that he got the number between 1 and 6, and he just gets away and does the further action of moving the token. So इस system में what is happening is we are using just a normal service. So let's scale it a bit. So let us make it more scalable, or you could say more feature rich. I would say more feature rich. Suppose we didn't want to design a dice. We wanted to design a random number generator. So suppose in this scenario the user wants to not play Ludo this time, or just want to play Snake and Ladder. He wants to play say Housey. So in Housey we need to generate random numbers between 1 to 100. Now if you just use that dice roller service, could he get a number between 1 and 200? Answer is no. But if he had created some kind of a random number generator and asked the machine to generate a number between 1 and 6 for the first case, and between 1 and 100 for the second case, if he has made a particular service called as random number generator, and he has provided some input, or you could say some request to the machine to just generate between 1 and 6 and 100, he could use that one particular service only for both the use cases, for Ludo also, Ludo Snake and Ladder service game also, and for the Housey as well. So in order to make our application more inclusive, or inclusive is more generalized, we allow the user, the machine, the code running on the machine allows the user to interact with the machine by giving inputs. So the diagram would be, we have a random number generator here. Here is our user. He says, okay, I want to help me.
I want to generate a number between 1 and 100 this time. The user sees the which is actually the input to the service or the software, and yeah, the machine uses some computational logic and sets some constraints. So the constraints become that the answer that the output would be between 1 and 100 this time, and then after generating that output, it's thrown back to the user or the customer, and this is hidden. So what did we learn? We just learned that what actually a software is. A software is nothing but some piece of code that does some computational logic, that runs some computational logic on the data that it receives as inputs from the user and generates a desired output and give it back to the user or the customer. So a computer, we could say, is a computational machine that operates. Computer is a computational, you could say, machine that operates on the data fed into it, or I could say on the input data, operates on the input data, does some processing and return. See, the output is thrown back or it is returned, and does some processing and returns you could say the desired output back to the, and returns some desired output. It's not necessarily that it will be desired funneled back to the user only. Okay, so that is what I would say a brief description of a computer and software is. In the next video, we'll try to understand how we can code, how we could learn the art of programming, and how we can model real world problems through code and use the software to make the world a better place, because a software can be used to solve really pressing problems prevalent in a society. Thank you for this support, users, and please press the bell icon to show your support to iTalk Code, and stay tuned for further videos. Thank you.